Sometimes the best part of a road trip is not the destination, but how different it feels when you finally reach. Welcome to Miles and Smiles. The moment you enter Goa, everything slows down. Cleaner roads, less chaos, completely different vibe from Mumbai. After hours on NH66, this feels like a reward. The roads here are simple, but the vibe changes instantly. You are no longer rushing, you are just driving. This was our apartment in Goa for next 2 days. We booked it through Airbnb and we got it at a very reasonable price.
The next day, we decided to head towards South Goa, away from the usual crowd. Palolem is known for its calm beaches and laid-back vibe. ये कौन सा गाना लग गया? अरिजीत सिंह भी है इसमें। अरिजीत सिंह का भी खत्म हो गया लग रहा है, दर्द खत्म हो गया शायद उसका भी। ही हैज हील्ड आउट, इसलिए गाने नहीं आ रहे अभी। गाने भी तभी आते हैं ना ऐसे दिल से। आहा ये अपन एक काम करते, टेप बंद करते, अपूर्वा के पास माइक देते। ये देखो अपूर्वा का दोस्त, अपूर्वा की बिरादरी का था वो, इसलिए वो बंदू बंदू कर रही थी। नहीं भाई, हम इंसान उसे चाहे नहीं, हम हमारे नहीं थे भाई वानर। सफेद बंदर है।
हाँ गाइस, इसकी अच्छाई मेरे से पूछो, मैं इसके रग रग से वाकिफ हूँ। ब्रो फिलहाल जेल तो तू रहा है। मेरा क्या है, मैं 2 दिन का हूँ। Before reaching the beach, we stopped for food at the Mill. It's inspired by New Zealand cuisine, and if you are someone who is foodie, then this place is a must check out. Calm water, soft sand, and a sunset that makes the journey worth it. From Mumbai traffic to Goa's calm, the change doesn't happen in distance, it happens in peace. This was Miles and Smiles for you.